So let me remind you once again the male reproductive system of the frog, as we said over that the testes are going to be connected with structurally and functionally with the help of structurally. क्या मतलब है बेटा? The testis connected to the kidney with the help of mesorchium. कल बोले थे ना. And functionally, the sperms produced here will come to the Bidder's canal, and the ureters are going to open into the cloaca, as we said it earlier yesterday, whereas it acts as a urinogenital canal. This is a thing we said yesterday, and along with that, some fat bodies are attached to the kidney. Okay, so that was the male reproductive system, and we are seeing the urinary bladder and opening up the rectum as an anus into the cloaca. That was the male reproductive system we are seeing yesterday. A male reproductive system है बेटा. So याद क्या रखना है male reproductive system में? You people need to remember एक mesorchium. The connective tissue which is connecting the testis to the kidney is called as mesorchium. वो याद रखना है बेटा. And the Bidder's canal, the vasa efferentia of the testis come and opens into the Bidder's canal. और 2 words याद रखना है. Okay. So female reproductive system. Female reproductive system. Let's talk about that. Let me show you the kidney first of all. Actually, the kidneys are not having any structural relationship with the ovaries. That means here the pair of ovaries are completely separate, not connected with the kidney. Ovaries are not connected with the kidney structurally and functionally also. Means ovaries released ovum. Ovaries का जो released ovum है ना बेटा, they are collected by oviducal funnels. They are collected by oviducal funnels. Okay, so these particular oviducal funnels will come and open into the cloaca separately, as well as we know that ureters are also coming and opens into the cloaca. So that was the difference here. So here the male reproductive system structurally connected to the kidney, functionally transporting sperms to the ureters, but here no relation with the kidney with ovaries in the female reproductive system. That only you have to take care of it. Okay, so then they get open here. Let me draw this little bit bulge. Seminal vesicles बोल के रहता बेटा. That नहीं चाहिए हमको, labeling भी नहीं दिया NCERT में. So that's it. ये क्या है बेटा? These are ovaries, a pair of ovaries, oviducal funnel, oviduct. Okay, oviduct. Chalo. This is about the both male and female reproductive systems. And then if you have any doubts, you can ask here now. ओके बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे. No doubts. Shall I raise this?
Okay, then fertilization is going to be external. क्या मतलब है बेटा? Fertilization external. Fertilization external. What is the meaning? The sperms and eggs are released in the water. That means during copulation time, the sperms from the male frog, ovum from the female frog are released into the water. Are released. Sperms and eggs are released in the water, and then the fertilization occurs in the water. It's released into the water and fertilization occurs in the water outside the body. For fertilization outside the body, what do you say? External fertilization, है ना? Released in the water and fertilization occur in water. हो गया. Fertilization external. Development of the frog. Development is going to be indirect. क्या मतलब है बेटा? Development indirect. ये तो आपको मालूम है ना? Development indirect. Growing in stages. आंसर नहीं आ रहा है. Okay. That growing stages larva के साथ है ना बेटा. Indirect development का मतलब क्या है? That development is indirect means larva is present. अगर लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं हम. सो लार्वा का नाम बताना होगा हमको. टैडपोल लार्वा. टैडपोल लार्वा. So fertilization is external, development is indirect, and development is indirect. Larva क्या है बेटा? The tadpole is the larval form. Okay, चलो. The screenshot ले लो. हो गया हमारा frog. Economic importance बताना होगा. Economic importance मतलब the frog is okay. चलो ले लो. होने के बाद that last 2 points लिखेंगे हम. हो गया बेटा? So finally, frog play a vital role in ecosystem. In what way, beta? This is the question in the NEET actually. In what way? Participating in the food chain. Participating in the food chain. Food chain का एक डाल दूंगा मैं. Grass. Grass is eaten by grasshopper. Grasshopper, you can take any insect here. You can take any insect. Then grasshopper is eaten by frog. In that way, it controls the population of insect. अगर frog नहीं है तो क्या होगा बेटा? Chain is getting breakdown. Snake eats frog and hawk eats the snake. A food chain का एक crucial part है frog का. So that's why we are saying here that frog is playing a vital role in ecosystem. Frog play a vital role in ecosystem, participating in the food chain. Okay, that is one of the issue. And other thing, we can say frog as a food in some areas of world. The legs of the frog is eaten by in muscular legs of the frog is eaten by some areas of the world. So some areas of the world बोलते हैं हम. सबको मालूम है frog खाने वाला कौन है? Frog क्या? Animal kingdom का हर एक animal खाने वाला एक ही है ना पूरा world में. कौन है बेटा वो? The common name, scientific names कर रहे हैं ना हम. तो सब खाने वाला आदमी है.
चाइना, वेरी गुड, सबको मालूम हो गया। Chinese people given 1.5 year holiday for the students by eating anything. Thanks to Corona, my God. चलो बेटा, हो गया फ्रैग हमारा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बड़ा सा चैप्टर हो गया। ओके, सो आपका क्या है बेटा सिलेबस? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अप टू नहीं, पूरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड 3 फाइलम्स, फाइलम पोरिफेरा, सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा, फाइलम पोरिफेरा, सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम आया तो समझो बेटा आपका 60% पोर्शन हो गया जूलॉजी से। बाकी का क्या है? इकोलॉजी है ना, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड डिसीज तो आता ना 8.1 8.5 वी आर एनफ गुड एंड परफेक्ट, है ना बेटा? सो फोकस करना है दैट गुड opportunity this week. We have structural organization chapter again in the NEET examination. Now all revision, yeah revision करने वाला है, we are going to revise. नहीं वो structural organization तो बहुत बार किया ना बेटा। I'll do revision animal kingdom, porifera, coelenterata and ctenophora, तीनों है ना। I think the day when I am absent आपका porifera हो गया है ना बेटा, आपका porifera हो गया। So that's why I am moving towards coelenterata and ctenophora. चलो coelenterata के बारे में देखेंगे आप। coelenterata बताओ बेटा, किंगडम, किंगडम it belongs to Animalia, kingdom it belongs to Animalia. सब किंगडम यूमेटाजोआ, वेरी गुड। ग्रेड नहीं बेटा, वायलेटेरिया नहीं, रेडिएटा, रेडिएटा, सिलेंटरेटा के बारे में पूछ रहे ना हम, नो प्रॉब्लम, थोड़ा रिवीजन चाहिए ना हमको। ग्रेड रेडिएटा आल्सो कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिका। चलो आप बताओ यहाँ की सिमेट्री क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इन फाइलम coelenterata? वेरी गुड, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ओके, देन नंबर ऑफ germ layers. आई नो एनिमल किंगडम शुरू किया तो आंसर्स विल कम लाइक ए फ्लड, है ना? Very good, very good. Diploblastic, 2 germ layers. That's what we said, diploblastica. 2 germ layers. Type of organization. Tissue grade of organization. Type of organization, tissue grade of organization. So these are all the things we already know. Coelenterata के बारे में, radial symmetry, 2 germ layers, and tissue grade of organization, and all this because of our kingdom Animalia, है ना बेटा? All these are belongs to kingdom Animalia. Okay, now coelenterata के बारे में बताना है तो we need to talk about that particular 2 separate forms which are present here. क्या है बेटा वो? Polyp form and Medusa form. What do you call them as? Polyp and Medusa. Okay, polyp is stationary or sedentary बोल सकते हम। Polyp is sedentary or stationary. Medusa is free swimming, can swim in the water, but polyp attaches to the substratum. Type of reproduction in the polyp, asexual reproduction रहता बेटा,
Medusa is having sexual reproduction, polyp is asexual, polyp is having asexual reproduction, and Medusa is with sexual reproduction, and बस हो जाता है ना. So just we need to remember these two stages, polyp and Medusa. Some of the animals of phylum Coelenterata look like polyp, hydra ले सकते आप. Some of the animals look like Medusa, Aurelia, jellyfish ले सकते आप. But some of the animals are having some specialities, like polyp asexually reproduce and produce Medusa, and Medusa sexually reproduce and form polyp. So क्या बोलते बेटा इसको हम? Because this is a very bigger question here in the total chapter. Metagenesis, very good, very good. That polyp asexually reproduce and form the Medusa. Medusa sexually reproduce and form the polyp. So क्या बोले बेटा हम इसको? Metagenesis. This is called as metagenesis. Example क्या है? Example obelia. Metagenesis example obelia. So वो याद रखना है. Okay, very good. Next, some of the polyps gathered. Some of the polyps are gathered. And like this, एक medusa बन गया nematophore. So याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, अलग सा names, but it will help us to understand the concept. Some of the polyp, एक polyp बन गया gastrozoid, एक medusa बन गया nematophore, then एक polyp बन गया ductilozoid, एक medusa बन गया gonozoid. Means what we are saying here, some polyps and medusas came together and form a colony. Look like a single organism. A single organism नहीं है बेटा, colony है. इसमें pneumatophore air filled sac है, that is to float on the surface of water. Water में float करने के लिए pneumatophore. Then gonozoid for reproduction, gastrozoid for digestion, ductilozoid for protection, defense. Means here that colony बन गया बेटा. Some polyps and some medusas came together and formed a single organism. Okay, what do you say this feature? What do you call this feature? आ गया answer. Yes, very good. खाली ये नाम याद रखना है आपको. Polymorphism is a characteristic feature of which phylum? It may ask. और which animal? Animal का भी है example हमको. Animal का example बताओ बेटा. Very good. Physalia, Portuguese man of war. Physalia, Portuguese man of war. So a polyp है बेटा, and this is Medusa, and these two are the special features of polyp and Medusa. और एक है ना, the polyp form का. Some of the polyp forms are going to form a calcium carbonate exoskeleton, which going to grow in the thousands of years in the form of a bigger mountain like. क्या बोले हम इसको? Corals and coral reefs. बोले ना, ये भी आएगा एग्जाम में क्वेश्चन. Coral and coral reefs is the characteristic feature of coral and coral reefs. So ये तीनों बोलना पड़ेगा आपको Coelenterata बोल के. नहीं आपको आई थिंक सो यू डोंट रिक्वायर एनी स्क्रीनशॉट. खाली रिवीजन है ना बेटा. आप सबके पास नोट्स हैं, सबके पास नोट्स है ना. चलो चलो अब क्या करना है हमको? आप क्या करना है बेटा? फिजियोलॉजिकल फीचर्स देखना पड़ेगा ना. फिजियोलॉजिकल फीचर्स and Coelenterata is also called Cnidaria.
क्यों बोले हम इसको निडेरिया? Because of having nidoblast cells. We can say them as stinging cells. Nidoblast cells are stinging cells बोलते हैं हम इसको. Nidoblast cells are stinging cells. Okay, so ये है बेटा, निडोब्लास्ट सेल्स और सिंगिंग सेल्स. कहां पे रहता? अगर आप हाइड्रा को देखें तो these are all the tentacles of the hydra. Okay, tentacles of the hydra. So these particular tentacles are having nidoblast cells. Okay, ये डॉट लिखे ना, ये डॉट का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. ये कोई माइक्रोब आया, कोई और फूड आया, इफ इट टच दैट, क्या होता है बेटा? दैट नीडल लाइक स्ट्रक्चर बाहर आके that inject the poison, needle like structure बाहर आके that injects the poison. इसको क्या बोले हम सेल्स को? nidoblast cells. So Coelenterata बोले तो आपको आएगा क्वेश्चन nidoblast cells, metagenesis, polymorphism, corals and coral reef formation. Okay, these are going to be unique issues here. So you people are reached almost 2 months, 3 months over. You might have taken the state textbooks भी लिया होगा आपको. State textbooks भी लिया होगा बेटा. The state textbook explanation is 3 times more than our NCERT textbook. Generally students are having some curiosity. और जानना चाहिए, और जानना चाहिए. So curiosity में that you know a lot but you don't know what is polymorphism. Marks तो नहीं आएगा ना? Sir, I have general knowledge. किसी को जनरल नॉलेज नहीं चाहिए, नीट का नॉलेज चाहिए. जो बुक में है ना वहां से देने वाला है. एंड यू पीपल, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आपके पास जो स्टेट टेक्स्ट बुक है ना बेटा, आपके पास है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोज आर कंडक्टिंग नीट एग्जामिनेशन, उसके पास नहीं है. ओके, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट. सर आप पूरा क्यों नहीं बताया? पूरा भाई पूरा बताया. कहां से बताया? एनसीईआरटी से बताया. ओके, कहां से बताया बेटा? एनसीईआरटी से बताया. सो पूरा हो गया, नीट के लिए हो गया. सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव दिस 3 times मोर. मींस पोरीफेरा बोले तो कल्केरिया, हेक्साक्टिनेलिडा, डेमोस्पांजिया. सिलेंटरेटा बोले तो हाइड्रोजुवा, स्काइफोजुवा, एंथोजुवा. दैट लाइक दैट वी हैव क्लासिफिकेशन आल्सो. सो करने वाला है बेटा हम क्लासिफिकेशन, बट इन आईपी एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, पूरा नीट सिलेबस होने के बाद आईपी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चंस अलग सा पढ़ेंगे हम. ये सिलेंटरेटा से क्लास एंथोजोआ इज सो फेमस इन आईपी एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन. सो पब्लिक एग्जामिनेशन का क्या है बेटा? दैट 1-2 दिन में कर सकते हैं हम. सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन द स्टूडेंट्स, फोकस ऑन एनसीईआरटी. Focus on NCERT. I am requesting not to open the state textbook. NCERT में आपका structural organization, animal kingdom, human health and disease, and 4 chapters of ecology, organism, population, ecosystem, biodiversity, environmental issues, which you are going to complete all of them in the coming 2 months. हो गया तो समझो बेटा आपका first year 100% that going in a right dimension. You people are walking towards the medical college. Then so revision करते गए तो रनिंग हो जाएगा मेडिकल कॉलेज तक. ओके, ओके. I don't know the student is joking or seriously saying NEET equal to SRIKANTH sir. Maybe होगा शायद, means you may that joke मारा होगा शायद, but I am saying serious because I am dedicated this particular medical entrance के field में 22 years का experience है हमको. So even you play as a joke, I am taking it as serious. I am the technical person here, which I can take you towards the medical college. And as I already said to you, Veda, there is no any medical college in the 2 states, AP, Telangana, mein, where my students are not there. That means at least 10 to 20 students in every medical college, whole AP and Telangana, you can see my students. Okay.
चलो और क्या करना है हमको, फीचर्स के साथ चलना है ना, फीचर्स के साथ चलना पड़ेगा। सिलेंटरेटा फीचर्स, हैबिट एंड हैबिटेट, आप बताइए बेटा, आप बताइए, हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ रहता है ये? Yeah, very good. They are present in marine water and fresh water. Very good बेटा, marine water and fresh water. लोकोमोशन के बारे में बताइए, लोकोमोशन, अबाउट लोकोमोशन। Yeah, mostly marine. लोकोमोशन। पॉलिप के बारे में क्या बोलना है बेटा? पॉलिप इज सेडेंटरी, cannot move, attaches to the substratum. Medusa we can say free swimming, medusa free swimming बोल सकते हैं हम। ओके, न्यूट्रिशन, फूड कलेक्शन, डिफेंस, कैप्चर ऑफ द फूड, दैट कौन सा स्ट्रक्चर है which is going to helpful for the defense, प्रोटेक्शन के लिए, कैप्चर ऑफ द फूड, that particular structure helpful for the food collection. Super, very good. So food collection कैसे होता बेटा? Food collection along with the defense, nidoblast cells are doing this particular activity. Nidoblast cells. Okay. Digestion. Digestion के बारे में बताइए। या nidoblast, capture of prey. Food collection का मतलब वही है। Yes. Nidoblast cells, एक बार दिखाऊंगा बेटा डाइजेशन कैसे होता। That अगर आप एक पॉलिप स्टेज को देखें तो you can see here and some cells are present here like this. आप यहाँ पे cells देख सकते। And digestion occur inside the cell, digestion occur outside the cell. Gastrovascular cavity बोलते बेटा इसको हम। Outside the cell जो cavity है ना, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, नाम की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? ये सेल्स है ना, सेल के अंदर हो रहे हैं, सेल के बाहर भी हो रहे हैं। सेल के अंदर हो गया तो क्या बोले हम? या वेरी गुड, इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल। एंड सेल के बाहर भी हो रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर एंड extracellular digestion. Okay, चलो next, respiration. Respiration कुछ नहीं बेटा, through diffusion. There is no special respiratory organ, just through the diffusion. Circulation, same. Respiration and circulation through diffusion. Okay, no special structure. Excretion, या थ्रू बॉडी सरफेस बोल सकते हैं हम, डिफ्यूजन ही है। एंड एलिमिनेटेड थ्रू ए सिंगल ओपनिंग है ना बेटा, एलिमिनेटेड थ्रू माउथ, जो भी हो एक ही ओपनिंग है, सो वहां से चला जाएगा बाहर। ओनली वन ओपनिंग देखा, सो एंट्री एग्जिट का एक ही है ओपनिंग, डिफ्यूजन बोल सकते हैं हम, और एलिमिनेटेड थ्रू ए सिंगल ओपनिंग माउथ। एक मिनट, एक डाउट आया सर। yesterday we have drawn fat bodies on the sperms. I don't know fat bodies on the sperms. I didn't understand your doubt बेटा। ये kidney है, this is kidney and these are the fat bodies. Okay, ये testis है and this is the connection I made. Yesterday and today कुछ change नहीं किए हम। जस्ट yesterday थोड़ा बिगर ड्रा कर रही है एंड टुडे जस्ट छोटा सा कर दिया वो।
Okay, so what is your doubt? Yesterday we have drawn the fat bodies and the spams. Spams microorganisms है बेटा, माइक्रो यूनिसेलुलर है. Spams बोल के कुछ लेबलिंग किया क्या हम? Means I didn't understand actually what you are saying. Yesterday we have drawn fat bodies and the spams. Today on kidneys. Yesterday and today, in both the time I drawn the testis and kidney only. Okay, हम नहीं देखे थे, अभी देख रहे हैं हम. अच्छा अच्छा, 3 बार भेजा सेम क्वेश्चन. स्पैम्स बोले तो टेस्टिस का एक प्रोडक्ट है बेटा, छोटा सा रहता, यूनिसेलुलर रहता, माइक्रोस्कोपिक रहता. यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है. ये टेस्ट, ये किडनी है बेटा, दिस इज टेस्टिस. ऊपर फैट बॉडीज है. फैट बॉडीज का हमको कुछ सिलेबस में कुछ भी नहीं है. एंड इट हैज अ कनेक्शन. ये आके बिडर्स कैनाल में ओपन हो रहा है. यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? वेरी सिंपल. एंड स्पेम कहाँ से आ गया बीच में? दैट आई एम कंफ्यूजिंग फॉर दैट एक्चुअली. So sperm and testis, I think you might have confused in between them. है ना बेटा? Testis produce sperms. Okay. हाँ चलो. Let's come through this expression. बोल दिया हम. Nervous. Nervous बोले तो diffused nerve net. Okay, answers are coming. Super. डिफ्यूज्ड नर्व नेट. ऐसा ही प्रैक्टिस करना होगा बेटा आपको, ऐसा ही प्रैक्टिस करना होगा. दैट मीन्स ये ऑर्डर डाल के आपको प्रैक्टिस करना होगा. लोकोमोशन, डाइजेशन, ऐसा. नर्वस क्या रहता बेटा? डिफ्यूज्ड नर्व नेट मीन्स न्यूरॉन्स का नेट रहेगा पूरा बॉडी में. न्यूरॉन्स का नेट रहेगा लाइक दैट. नर्व नेट रहता, नेट जैसा पूरा सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी. सिंपली वी आर सेइंग इसको ब्रेन नहीं है, खाली नर्व्स है. दैट दे आर हैविंग ओनली नर्व्स का नेट, नेट जैसा रहता बेटा. नेक्स्ट स्केलेटल. स्केलेटल के बारे में लिखे ना हम. या वेरी गुड, बिफोर यू आर सुपर फास्ट देन मी. एक्सोस्केलेटन है बेटा. Exoskeleton is there. Exoskeleton means skeleton outside the body in the form of calcium carbonate. Exoskeleton in the form of calcium carbonate. क्या बोले हम इसको? corals बोले हम. corals. In some we'll find in the form of calcium carbonate above on the polyp, particularly above on the polyp. Good, good. Above on the polyp, इसको क्या बोले हम? corals. corals can grow like a big mountain. coral reef बोल सकते हम. Okay, और क्या? reproduction. We made a protocol, है ना? क्या बोलना पड़ेगा? That unisexual or bisexual, है ना? हाँ, result in obstruction of ships. याद है पूरा? Very good. या पॉलिप में क्या रहता बेटा? एसेक्सुअल. मेड्यूसा अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेड्यूसा अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरी गुड. एंड डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. हमारे एक्चुअली लार्वा ने मेंशन नहीं किया. प्लान्यूला इज गोइंग टू बी द लार्वा. सो जो नहीं है बेटा वो नहीं करेंगे हम, बिकॉज इट्स ए बिगर चैप्टर. Phylum Porifera, we can say at least 1 week we can explain. Coelenterata 1 week we can explain. So क्या बनेगा वो? डिग्री बनेगा, पीजी बनेगा. एनिमल किंगडम का पीएचडी होगा हमारा, रिसर्च होगा, बट फाइनली नीट नहीं आएगा. दैट्स व्हाई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन चाहिए, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, आल्सो फॉर द लेक्चरर. Okay, चलो. This is all about Coelenterata. Coelenterata के बारे में अभी हम एग्जाम्पल्स पूछे तो I think it will come like a
फ्लड, है ना? बोलिए बेटा एग्जाम्पल्स, सिलेंटरेटा का एग्जाम्पल्स। एक एक आ रहा है। अडामसिया, सी एनिमोन, एक आया। अरेलिया नहीं बोल रहे? अरेलिया, जेली फिश, फाइसीलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, फाइसीलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। ओके, और क्या बेटा? ओबीलिया, सी फर, ओबीलिया सी फर, वेरी गुड वेरी गुड। पेनाटिला, सी पेन, मियांड्रिना, ब्रेन कोरल, मियांड्रिना ब्रेन कोरल, यस यस वेरी गुड। गार्गोनिया नहीं आया, ओके। गार्गोनिया, सी फैन। एंड फाइसेलिया का स्पेशलिटी बताओ बेटा, ओबीलिया का स्पेशलिटी बताओ, फाइसेलिया का स्पेशलिटी बताओ। Polymorphism, Phacelia, polymorphism. Obelia is example for metagenesis. Obelia is example for metagenesis. Yes, very good, very good. I think if any new students are there, even they can answer. है ना बेटा? हमारा वो हो गया ना, परिफेरा हो गया वो, एंड अभी सिलेंटरेटा, एंड देन नेक्स्ट टीनोफोरा। चलो एक बार टीनोफोरा का लिखेंगे हम। टीनोफोरा, किंगडम सिमिलर रहता ना, बट लिखेंगे हम। किंगडम एनिमेलिया, ओके। सब किंगडम यूमेटाजोवा, वेरी गुड। ग्रेड, ग्रेड बताओ बेटा। यस, रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिका, ग्रेड रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिका, ग्रेड रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिका। Okay, so with these I think we can say, है ना बेटा, what type of symmetry they have? They are radially symmetrical, very good. Number of germ layers, डिप्लोब्लास्टिक बोले ना हम, 2 germ layers. Radial symmetry, number of germ layers, 2 germ layers. Type of organization, tissue level of organization, just like Coelenterata, है ना, just like Coelenterata. Radial symmetry, 2 germ layers, tissue level of organization. And आप क्या करना है, आप क्या करना है, शुरू from
रेगुलर कॉमन फीचर्स, हैबिटेट हैबिटेट, चलो आप बताइए, हम सुनेंगे यहाँ पे। हैबिट एंड हैबिटेट, इज देयर एनी स्पेशल? यस, नहीं नहीं बेटा, मेराइन नहीं बोलते हम, एक्सक्लूसिवली मेराइन, वो बोलना पड़ेगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन। They are exclusively marine organisms. Habit and habitat. Locomotion, is there any special? Yes, comb plates are there on above the body surface. 8 rows of that बाकी का उस तरफ 8 rows of comb plates are there, which are ciliated comb plates, helpful for locomotion. Yes, ये है comb plates. So ये याद रखना पड़ेगा। और क्या बोले हम? Exclusively marine. Exclusively marine. Next, nutrition, food collection. है बेटा, है यहाँ पे। Okay, commonly known as comb jellies or sea walnuts. Comb jellies or sea walnut. That जैसा हम सिलेंटरेटा में निडोब्लास्ट बोलते हैं ना, ऐसा यहाँ पे भी है। We can say them as colloblast cells बोल के रहता है बेटा, colloblast cells बोल के रहता। That डिफेंस का, फूड कलेक्शन का, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए colloblast cells रहता, but NCERT में नहीं दिया, that's why went over. Then digestion बोले तो same like Coelenterata, यहाँ पे भी both intracellular and extracellular digestion. Respiration through diffusion, circulation, diffusion, excretion, यहाँ पे भी एक ही opening है बेटा, either through the body, diffusion through the body or eliminated through the mouth. So as क्या Coelenterata में बोले थे, the same here, like digestion से लेके excretion तक, इसलिए नहीं दिया टेक्स्ट बुक में। Nervous, same, वो भी सेम, डिफ्यूज्ड नर्व नेट रहता, रेडियल सिमेट्री है ना बेटा, दैट्स व्हाई वी कैन से नर्व नेट इज डिफ्यूज्ड नर्व नेट ही रहता। ओके, स्केलेटल, नॉट मच इंपॉर्टेंट हियर। रिप्रोडक्शन, ये बताना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन या एक्सोस्केलेटन रहता, कोम्ब प्लेट्स बोले ना अभी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बताना पड़ेगा। ये यहाँ पे कोई पॉलिप मेड्यूसा नहीं है बेटा, वी क्रॉस्ड ऑलरेडी सिलेंटरेटा, अभी टीनोफोरा में है, वी आर इन टीनोफोरा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। वेरी फ्यू पॉइंट्स आर देयर बेटा टू आस्क एज ए क्वेश्चन। एक ये ले लो कोम प्लेट्स का, कोम प्लेट्स, देन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो मालूम है हमको बिकॉज किंगडम एनिमली आया ना। देन ये देखिए एक्सक्लूसिवली मेराइन, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर which already came in the need, bioluminescence, production of light by the organism, production of light by the organism,
क्या बोले बेटा हम? Bioluminescence, production of light by the organism is called bioluminescence. Okay, so this is all about टीनोफोरा बेटा. एग्जाम्पल्स बताइए यहाँ की. एग्जाम्पल्स फ्लोरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना. फ्लोरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? कोम जेलीस और सी वॉलनट्स. सी वॉलनट्स और कोम जेलीस बोलते हैं हम इसको. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम कोरीफेरा से लेके सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा. ओके, सो ये फीचर्स का याद रखना पड़ेगा बेटा आपको. फीचर्स का याद रखना पड़ेगा. चलो, आई एम गेटिंग ए साइड. चाहिए तो नहीं है, सबके पास है. पूरा एनिमल किंगडम का नोट्स है सबके पास. ओके बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम नॉट विजिबल. आ गए ना? चलो, और डाउट्स है तो बताओ. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज नीट में आए तो इंपॉर्टेंट बोलेंगे ना. एनिमल किंगडम का फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स बोल के एक वर्कशीट भेजा ना बेटा आपको. एनिमल किंगडम का फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स. पहले एग्जाम्पल्स आएगा 41, बाद में वर्कशीट आएगा. सो वो पढ़ो. कोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा का फीचर्स ढूंढ निकाल के जस्ट वो पढ़ो. ओके, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है? पूरा फिलअप करना होगा बेटा आपको. पूरा फिलअप करना होगा. जो वर्कशीट हम भेजे ना आपके लिए, एनसीईआरटी का हर एक सेंटेंस को निकाल के वर्कशीट बनाया ना बेटा. ओके, सो वो करना पड़ेगा. ओके, एग्जाम्पल्स आएगा ना. सिलेंटर, कोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा बोले तो एग्जाम्पल के साथ आएगा ना पैकेज. ये तीनों है ना एग्जाम में. सो तीनों आए तो उसका पैकेज, उसका एग्जाम्पल भी आएगा, उसका कॉमन नेम्स भी आएगा. बट ये तो छोटा सा काम है आपको, है ना बेटा? छोटा सा काम है आपको. टेकिंग दिस एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फिर पढ़ो बेटा. आप फिर पढ़ो, एक बार और पढ़ो. चलो, लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस. वी हैव कंप्लीटेड 3 एनिमल्स. एर्थवर्म किए थे हम, कॉकरोच किए थे, फ्रॉग वी आर कंप्लीटेड, है ना बेटा? फ्रॉग वी आर कंप्लीटेड, एर्थवर्म इज ओवर,
cockroach is over and frog is also over, है ना? चलो, we'll try to make some questions here. We'll try to make some questions. हम लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा. ओके, पहले आपका आवाज बंद करना है ना. 1 मिनट. अय्या. चलो, आंसर बताते जाओ बेटा, आंसर बताते जाओ. एनल स्टाइल, एनल स्टाइल. Very good. Belongs to male cockroach. Bitter's canal. Male frog. Bitter's canal, male frog. Very good. Bitter's canal belongs to male frog. Yes. Hermaphrodite. आपका ऑप्शन तो 3 ही है बेटा. एर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग. वहां से आंसर करना होगा. वेरी गुड. एर्थवर्म, एर्थवर्म. हेर्माफ्रोडाइट बोले तो एर्थवर्म. वोकल सैक्स. Very good, very good. Clitellum. Clitellum, earthworm. Very good. Clitellum क्या है बेटा? Earthworm. Okay. Anal cerci. Anal cerci. Cockroach, male and female. Very good. जो लोग आंसर रॉन्ग दे रहे हैं ना बेटा, आप चेक करो एक बार. Collateral glands. Collateral glands. कॉकरोच. कॉकरोच का मतलब क्या है? मेल और फीमेल. वेयर इट इज? कोलेटरल ग्लैंड्स. बिलोंग्स टू वेयर? मेल और फीमेल? नहीं बेटा, रॉन्ग, रॉन्ग. 99% we get questions from the cockroach in from reproductive system only. रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही आएगा बेटा. आप चेक करके फिर बताओ.
कोलेटरल ग्लैंड्स कहां पे हैं? So people are saying cockroach male. अब इतना लोग बता रहे हैं ना, हमको डाउट आएगा ये सही है शायद. Though only 2 students said that female cockroach, only 2 students said female cockroach बोल के. फीमेल कॉकरोच है बेटा. कोलेटरल ग्लैंड्स आर बिलोंग्स टू फीमेल कॉकरोच. यूट्रिकुलाई मेजोर्स. ऐसा क्यों? एनसीईआरटी का ही लिखेंगे. मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड. Yeah, means here most people are answering wrong from reproductive system of the cockroach. समझ में आ गया. Mushroom gland belongs to male cockroach beta. Function of uricose glands. Function of uricose glands. कहाँ की है? इसका फंक्शन क्या है? My God, you're in which spams? चलो बेटा. फंक्शन ऑफ यूरिकोज ग्लैंड्स ढूंढ के बताना पड़ेगा. अगर हम यत्वाम का सेगमेंट्स पूछे तो आएगा नहीं इमीडिएटली. वेरी गुड. मेल कॉकरोच स्टोरेज एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड. वेरी गुड, वेरी गुड. नेफ्रोसाइट्स आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ nephrocytes are for excretion in nephrocytes in cockroach, nephridia in nephridia कहाँ पे रहेगा बेटा? earthworm में. ओके, सो वो डिफरेंस आपको ये समझना है. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. फ्रॉग. माय गॉड, earthworm बोल रहे कोई? चलो earthworm का भी लिखेंगे. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर. अब earthworm. हेड एंड ट्रंक. ओके, हेड एंड ट्रंक बोले तो टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन कॉकरोच. टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन कॉकरोच. Biting and chewing. Very good, beta. Biting and chewing. Fertilization in earthworm. Fertilization in cockroach. Fertilization in frog. earthworm external beta, not internal. एक्सटर्नल. earthworm में एक्सटर्नल रहेगा, कॉकरोच में इंटरनल होगा. कॉकरोच इज हैविंग इंटरनल, earthworm external.
earthworm external, cockroach internal. Yeah, and frog का क्या है? Again external. Okay. Development is indirect in. Development is indirect in. Earthworm, cockroach, frog. Heading वही है. That means बार बार option पूछने की जरूरत नहीं यहाँ पे. Then I am writing heading options. Earthworm, cockroach, frog. Options बोल दिया बेटा. Options जो भी asked here आपको बताना पड़ेगा. Earthworm, cockroach, frog बोल के. चलो क्वेश्चन नंबर 19. Development is indirect in frog. Very good. Parometabolous metamorphosis. Parometabolous metamorphosis. कहाँ की है बेटा? Very good. Very good. चलो अभी डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी बताओ. डायरेक्ट डेवलपमेंट इन. Yeah, you have to answer the two, earthworm and cockroach. वो दोनों में डायरेक्ट ही है डेवलपमेंट. Development is direct in both earthworm and also in cockroach. Spermathecae, single, left sac-like, right filamentous. इतना एड्रेस दे रहा हूं आंसर बताने के. रॉन्ग आंसर. एक बार सोचो, एक बार सोचो. Spermathecae, single, left sac-like, right filamentous. ऐसा एक spermathecae देखे ना हम. Like this, like this. Left sac-like, right filamentous. कॉकरोच नहीं बेटा, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच वो भी बताना पड़ेगा. मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच कहाँ की बोल रहे आप? ओके. Spermathecae, male cockroach. Are you sure? So that means ये पता चल गया. You people are not enough good optimum in cockroach reproductive system. Female cockroach. So cockroach reproductive system sync नहीं हुआ बेटा. That you have problem in cockroach. So that means questions along with the questions हमको ये समझना पड़ेगा exactly हमारा problem क्या है, कहाँ पढ़ना है. Okay, so you people are not answering. Galat answer never I seen in the juniors group. So today when I am asking cockroach reproductive system that you are getting, वहाँ पे हमारा वर्कशीट है ना बेटा, वो कल एग्जाम सेशन रखेंगे हम. that आपको बोलते जाना पड़ेगा. वर्कशीट है ना. Identify the animals as earthworm, cockroach and frog based on the given characteristics बोल के एक वर्कशीट बनाए ना हम. that वो आपके पास है ना, वो प्रैक्टिस करके रखो. कल will do. Okay. Then होने के बाद ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. Most of the people are not answering right means
आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। हार्ट्स इन एर्थवर्म कहां पे है? हार्ट्स इन एर्थवर्म, सेवन, 9, 12, 13. Very good. Okay, number of chambers in the heart of cockroach and frog respectively. कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, बिकॉज वन इज इनवर्टिब्रेट एंड वन इज वर्टिब्रेट, बट वहां तो हार्ट का चैम्बर्स है ना। 13 and 3, यस वेरी गुड। चैम्बर्स कितना आएगा बेटा? 13 and 3, वहां की 13 एंड यहाँ की 3, या ओके। चलो और दो लिखेंगे कॉकरोच का। मीन्स खाली वो सेंटेंस देख के इमीडिएटली आपको बताना पड़ेगा। विंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन। कहाँ की है बेटा? विंग्स, या वेरी गुड। मेल कॉकरोच, नॉट फीमेल कॉकरोच। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन, फीमेल कॉकरोच नहीं बेटा, मेल कॉकरोच। ओके, cocoon, ऊतीके, मिल्ट, स्पैन। ओ माय गॉड, मिल्ट एंड स्पैन तो अभी नहीं है। चलो लिख लिए हम, लिख लिए हम, वो बताएंगे, मिल्ट एंड स्पैन का भी बताएंगे। चलो, एंडिंग अप रेस्पेक्टिवली belongs to। ककून बोले तो, ककून बोले तो क्या आएगा बेटा? एर्थवर्म, नो डाउट, है ना। मिल्ट एंड स्पैन ये फ्रॉग का है बेटा, फ्रॉग का। स्पैम का ग्रुप को मिल्ट बोलते हैं हम, एंड एक ग्रुप को स्पैन बोलते हैं। मिल्ट स्पैन गलती से आ गया, नो मैटर बेटा, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है ना। चलो, we are ending up, and tomorrow we are going with some practice of questions beta. We are doing some practice. आप ये screenshot ले लो, लेना है तो, that most of the questions you people are not answered well, है ना। रिवीजन बोले तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बेटा, मीन्स हियर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया तो हमको ये समझ में आएगा व्हाट, वेयर वी आर परफेक्ट, वेयर वी आर नॉट। चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, दैट इसका प्रैक्टिस करो। यू पीपल आर नॉट आंसरिंग वेल हियर, दैट okay, then I am ending up the session. Thank you.